Hello everyone, very good evening and welcome to BYJU'S exam prep. I hope all of you are doing very good today and you are prepped up for this marathon that we're about to start. We are going to be doing many questions for hours and hours together, and we will ensure that we clear this examination easily and we get to grab a seat in the one of the most prestigious NLUs in our country. If you could quickly confirm that you can hear and see me clearly, we are going to be commencing with the session today. Everyone, can you hear and see me clearly? Good morning, everyone. Good morning. How are you guys today in the app? Can you hear and see me clearly on the YouTube channel as well? I hope everything is clearly audible and visible. So, over the last few days, we've been doing some exercises. We've had a crash course for AILET, all very good. And we have been practicing so many questions specifically pertaining to English, reasoning, and GK. And we are going to be combining all of that to the marathon today. We're going to be practicing loads of questions today. So you should be ready with your water, with your pen and paper. Let's commence the session. Let's begin with English in today's marathon. What are we going to be doing in the session today? I'm going to be making you solve passages that are more inclined towards AILET. Will be focusing on grammar-based questions, vocab-based questions, some direct questions because AILET gives you a lot of factual questions. We'll also be doing some of inferential questions as well. So we'll try to do as many passages as possible in the time that I am provided with. And let's go on right now. Let's have a look at the very first passage. Everyone, are you guys ready? Shall we begin with the session? Before I begin, one quick reminder for you. If you are somebody who is targeting 2025 CLAT, we have a free trial for 3 days going on our app. So if you wish to see what we provide to you as a student of our batches, enrolled into our batches, you can just register yourself with a phone number and see everything, access everything for free for the next 3 days. Do that right away. See what we have to offer and then you can register yourself as soon as possible. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. I think people joined a little late. Good morning, everyone. So, are you ready, everybody? Shall we begin with the session? Here's my very first passage. I want you to read the passage. I want you to focus on, let me write those down. Focus on, of course, the main theme. I also want you to focus on basic direct information, premise. Okay, because you get a lot of premise-based questions in AILET. We will also focus on some grammar questions when they come up. And if need be, we will come back to the passage to recheck the answer for the direct question. Here we go with the very first page. Read the page and send me a done. This passage spreads across 2 pages. This is page number 1. Read this carefully and send me a done. All the best, everyone.
Let's go to page 2, everyone. Now you know the gist of the story. Let's have a look at question number 1. The passage throws light on which of these following? Why inventions should not make common people jobless, how a well-meant invention can be misunderstood, what mischief an inventor can do to ordinary people, and how dangerous an invention can prove to be. What's your answer, everyone? A. Others answers B. B. Very quickly, the correct answer here is B, how a well-meant invention can be misunderstood. I will not explain the answer right now. Let's do the following questions, the 5, 6 remaining ones, and then we'll come back to the passage and understand that in depth. Question number 2. The crowd was protesting against. What was the crowd protesting against? The closing of workshops, the misdoings of Timonier, the newly invented sewing machines, or Timonier keeping the invention a secret. Was the invention new, by the way? Do you know if the invention was new? If you don't, then why are you marking a C here? They were, of course, protesting against the sewing machines, but was this a new invention? देखो देवीश्री, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए. एक बार ये लाइन पढ़ो. The invention was new. This tiny word, actually, when I counter questioned, you questioned your own answer. The answer still remains a C. The invention was new. Yes. So don't change your answer if I counter question you, okay? It was protesting against the newly invented sewing machine. You, of course, know why were they protesting. What they were protesting against was this. Why? You know the answer. Let's do question number 3 and we'll come back and discuss more of it. Question number 3, everyone. What motivated the crowd to turn against Timonier's sewing machines? Yes, you should. Don't doubt something that you've read. What motivated the crowd to turn against Timonier's sewing machines? This is probably the easiest question. Yes, now you guys have got that correct. It is a C. The demonstrators believe that the machines threatened their livelihood. The closure of the paragraph spoke about that. Question number 4, everyone, quickly. What was the consequence for Timonier's sewing machines? Consequence of Timonier's sewing machines.
They were successfully delivered to buyers. The crowd admired their innovative design. They were systematically broken up and destroyed. The machines were hidden away to protect them. See, A and B, of course, are positive ones, so they can't be the answer. The answer again is going to be a C. Now, before I proceed, I have a couple of questions for you. Okay. First, have you given ample number of mocks for AILET? If you still left with mocks that are not given, I will urge you to take one today and you can take one tomorrow as well. First thing in the morning and then you can just leave everything. But we have a marathon tomorrow as well. So you can probably take one more today and then leave everything on God because you worked really hard for CLAT and that's going to help you for AILET as well. I hope you've given ample number of mocks. Very good, Amit. Very good. Others, I hope you've given a lot of AILET based mocks. Two, there's another thing that I wanted to talk about. See, of course, the chances of quant coming in is less, but it might come back. A bit of it. If it does, don't be scared. Okay, make up your mind. This might happen because AILET, it's pretty infamous for giving you any surprises. Logical reasoning might also make a comeback with loads of sets coming in. Ankur sir has already taken a session yesterday. If you haven't seen that session, make sure you do that as well. ठीक है, अब एक बार पैसेज में वापस जाते हैं और पैसेज को एक बार जल्दी से briefly वापस पढ़ते हैं, then we will discuss the remaining questions. So what is the passage about? It's a simple narrative. It's an extract from a story, a short story that talks about the crowd being in Paris being supremely angry. Now, what are they angry on? Timoniers sewing machines. And why are they angry on that? What's your answer? Why are they so angry? Ma'am, do we have AILET mock on the app? Oh yes, Namra, we have loads of them, 15 of them. So when you open the test series, instead of just clicking on CLAT, you'll find various other law entrance exams as well. We'll be covering up SCLAT and MHCT as well. We'll have mocks for them as well. Okay? Just check it and give one today and you can give one tomorrow as well. So my question is, they have the crowd in Paris is angry on the sewing machines. Why are they angry? The last paragraph tells us they are breaking everything till the last piece is broken and they are angry because they think that they were unemployed because of the newly invented sewing machines. Of course, the sewing machines could have helped other people, but here, at least these people who are the tailors and seamstresses, they believe that we are being unemployed. Correct. Now, let's move on to question number 1. The passage throws light on why invention should not make common people jobless. This paragraph is not about normal inventions. It's only about one invention, and that's sewing machines. So this is a generic option eliminated. How a well-meant invention can be misunderstood. Yes, this is an example of how a well-meant invention. Was it well-meant? Yes, because when you automate things, it becomes faster. You remember we did a passage on the printing press, that how we did that in one of our mocks, that how printing press was meant to improve the lives of so many people. It was automation. But some people who wrote books with their hands might say, oh, I'm now rendered jobless. What do I even do now? He might hate the printing press. The same is happening here with the sewing machines. What mischief an inventor can do to ordinary people? It's not a mischief. It's an idea of helping others by automation. Only the tailors and seamstresses feel offended with that. How dangerous an invention can prove to be. भाई हम nuclear weapon नहीं बना रहे, sewing machine बना है तो dangerous तो नहीं है ये for sure. D is eliminated. ठीक है, understood Devishri here? It's not dangerous because dangerous could be like a nuclear weapon or if you've seen the maze, dangerous could be the things that people were doing there. If you haven't seen, you need to do that after your exams end. The maze 3 parts. Question number 2. The crowd was protesting against the newly invented sewing machines. New, I explained that. It is written in the passage. Question number 3. What motivated the crowd to turn against Timonier sewing machines? Because it threatened they believed it threatened their livelihood. So they wanted to destroy the sewing machines. Sewing machine ही नहीं रहेगा तो livelihood वापस आ जाएगी. That's why they wanted to destroy everything. Also, they wanted to attack Timonier as well. Remember that? Yes? No, Devishri, it's too harsh a word from the context of the passage. That's why we can't take it. Okay? Next question, question number 4.
What was the consequence of Timoneo's sewing machines? Consequence was, of course, people were angry. And then after that, the other consequence was they went forcefully into the warehouse and they destroyed every single piece into bits and pieces. So, C is the correct answer. The machines were hidden away to protect them. No, all the people were trembling, shutting the warehouse down, but they were not hidden away. It was there for public to buy. They wanted to sell it off to other people, right? So it was freely available. They were not hidden. D is incorrect. The crowd admired. ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पूरा passage negative है. Also successfully delivered to the buyer. It was not possible because it was broken down. So A and B are positives. They can't be the answer. The passage was written in such a way that it was clear that the author was. Oh yes, absolutely. All right. ठीक है आगे चलते हैं question number 5 पे. Shutters were being closed hastily because the shopkeepers. What's your answer for question number 5, everyone? Shutters were being closed hastily because the shopkeepers. Why were they closing the shutters hastily? They were scared. Their hands were trembling. Yes, because they were scared of the people on the streets. Because when the people get excited in a negative way, they would come inside and destroy every piece. The shops would be invaded and every machine would be destroyed. They were not closing the shop hastily because they had solidarity with the crowd. They were against the crowd. There were two teams, the shopkeepers and the people on the streets, the tailors. Okay, they were two opposite teams. They were not on one side. So D is incorrect. They wanted to protect the monitor already ran away from the back door. Usko protect करने के लिए नहीं, machines को protect करने के लिए they were shutting the shutters down hastily. So C is the correct answer. Question number 6, everyone. What is the meaning of the word devilish as used in the passage? So I'll take you back to the passage, everyone. We will read the word devilish and see in what context has this been used. Here is devilish. Read the line. Although, you can answer it without even referring back. Smash his devilish machines. Get Timonier. Timonier को भी smash करेंगे, machines को भी. And machines को devilish बोला है. ठीक है? So, of course, there is a negative connotation associated with machines. Now, let's come to our question number 6. Here, what's your answer? People, take a cue here. The way I read the sentence, I figured out that the way in which the word is used is a negative one. With that, you can eliminate a lot of options even if you do not know the literal meaning of the word. I'll reiterate, ऐसे बहुत सारे words आ सकते हैं एग्जाम में जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है. Going back, reading the line आपको इतना बेसिक सेंस दे देगा कि वर्ड पॉजिटिवली यूज्ड है, सेंटेंस किस तरीके से लिखा हुआ है, तो वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आप बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. Now since devilish was negative, benevolent, beni means good, so this is a positive option, eliminated. Okay, puzzling, confused, it looks like a neutral one. So ये भी eliminate जाता है. Ingenious and inventive also is a positive one. Gen, gen is a positive word. Ingenuous is a positive word. So eliminated. I have only one option left, that's sinister. Devilish is sinister and malevolent, something made with bad intention. Devilish machines क्योंकि वो machines harm कर रही थी लोगों के livelihood को, so इसलिए यहाँ negative word है. Hi, good morning Hitesh, you're very, very late. So the correct answer is C. Now before, and do we have one more question? Yes, question number 7, which, okay, ye thoda tricky hai. Now I want you to be very careful. Going back to the passage would not help you. So answer carefully here.
Absolutely, Parth. Careful, everyone, with this question. B.A. Devansh, do you know metonymy? Parth, Devishri, Namra, Amit, Ahana. What is the irony, according to you? When I say devilish machines, is that not personification? For alliteration, you need to go back because alliteration means repetition of the initial sound. Let me explain the meaning of all these words again. Irony is expectation kuch aur, hota kuch aur. Metonymy is one word, one name representing its associated words. Personification is a human characteristic given to a non-human thing. Alliteration is the repetition of the initial sound of at least two or more than two words. Like Sally sells seashells, SS is, sir is repeated, है ना? मैम दिस ईयर एनएलयू दिल्ली में सेक्शन के लिए अप्रॉक्स कितने अच्छा सिलेक्शन के लिए अप्रॉक्स कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है गिटार ये इसका आंसर देखो मैं आपको प्रिसाइजली एग्जैक्टली परसों दे पाऊंगी क्योंकि इस ईयर आपका टाइम लिमिट अब बढ़ चुका है तो लास्ट ईयर से कट ऑफ ऑब्वियसली हायर जाने के चांसेस हैं ठीक है तो इसलिए क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है हम आपको परसों ही एग्जैक्ट इसका आंसर दे पाएंगे पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बाद क्योंकि एआईएलटी हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा है अब सान्या आप कंफ्यूज हो गए when I said this question was tricky you missed out this word devilish one is not an example of personification. Two, even if it is not the overall figure of speech present in the passage. The correct answer is an irony. Irony is Timonier making sewing machines for the betterment of the lives of people. It was an invention. It made lives easy. Yet people expectation क्या था कि लोग खुश होंगे. But reality में क्या हुआ? People started opposing it. They destroyed his machines. The overall figure of speech in the passage is an irony. Understood? Don't double doubt yourself. You've prepared really hard. मैं confuse करूंगी तो confuse नहीं होना है. ठीक है? Yes part. Correct. Prashik. Correct. You mentioned. Correct, Namra. It is. Correct, Ahana. Absolutely. Understood, everyone? The correct answer is irony. So, questions figure of speech के भी आ सकते हैं. आज भी time है आपके पास. Barely half an hour, a quick revision of all of the figures of speech. भूल गए metonymy क्या था याद कर लो. Alliteration क्या था फिर से revision कर लो उसका ठीक है. And now before I proceed to the next passage, I want you to hit the like button. Did you hit the like button? You haven't. I have 26 people watching me live. It doesn't work like that. That's the Guru Dakshina you need to pay me, pay us for all the hard work we put in and bring the session to you, for all the questions we make and bring it to you. Hit the like button right now, everyone. That's how you repay us. Also hit the subscribe button if you're new to our channel. Let's come to question. Okay, we are done with this passage. We are going to come with our detailed analysis, our expected cutoff and the answer key on December 10th. Immediately after the exam, make sure you attend the detailed analysis. Okay, don't forget that. The moment you're out of the exam hall, join us live. Passage number 2. Read the page, send me a done. This passage spreads across 2 pages. Page number 1. Good luck. Thank you.
Page 2. Done, everybody? Let's move to our question number 1. According to the author, the real enemy of mankind is not science but war, because okay, Devishri. All right, Prithviraj. Everyone says that he. The correct answer indeed is a D. We'll discuss that. Question number 2. War can be stopped if. This is tricky. Let's see if you get this correct. Answers, guys. I can't see your answers. Is my chat stuck? Let me refresh. Okay, D, yeah, now I can see your answers. The correct answer is a B. Now, this line was directly written in the passage. Let's go back to the passage and see what the passage speaks about. Of course, there's a big claim, and the author is here trying to clarify the fact that people think that science is responsible and it is the greatest enemy for mankind. But the author disagrees. He says war is the greatest enemy of mankind. Science can be destructive, can be constructive, depending upon the context. It can be constructive when there is no war, but when there is war, the same science can be destructive as well. For example, nuclear weapon. We use nuclear weapon for power generation, constructive, but creating nuclear bombs, destructive. Yeah, so he says that, when you blame science to be the most destructive enemy of mankind, you're incorrect. It is how you use it in the war, because ultimately, if you use it in the war, it's going to be destructive as well. Our main problem, read this line very carefully. Our main problem is not to curb science. You can't stop science. You shouldn't stop science because it's going to make your life better. But your main aim is to stop war. You have to replace force with law. You have to replace anarchy with international government like UN. We don't need anarchy, we need an international government. We don't need force, we need law. That's when every nation supports each other. That's what is necessary, according to the passage, right? So question number 2 says, war can be stopped if we replace force with lawlessness. Force को replace करेंगे law से, हम
इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, एनार्की को हम इंटरनेशनल गवर्नमेंट से रिप्लेस करेंगे. The line clearly said that we need to curb war, and for that we need to do this. So D is the correct answer to this question. Question नहीं, C है correct answer. D, sorry. Next question. Question number 3. Primary concern expressed in the passage regarding the relationship between science and war. We just discussed it. Primary concern expressed in the passage regarding the relationship between science and war. Yes, we just discussed this line that science can be constructive and destructive depending on context. We took the example of sewing machine in the previous passage, right? We also took the example of nuclear weapons. Yes, the correct answer is a C. It can be constructive if there is no war, but if there is a war, the same invention, the same scientific discovery can be used for destruction. So the author also says this one point, remember, it might help you answer the other questions, that science and its presence aids wars. It just makes wars more terrible. We've been a witness of what's happening around the world lately. We've been a witness of so many wars in the last 2 years that we know what is happening here, right? C is the answer. Question number 4. A mounting capacity to destroy and be kept under control by our mounting capacity to destroy can be kept under control by how basically can you control the destruction. देखो ऐसे में पता है क्या होता है, अमित says D, Devansh, Prashik, everyone says D. Usually when you find such an option, most of the times that's going to be the correct answer. In this case, let's go back and see how we can control our mounting capacity to destroy. Education, tolerance, understanding, and creative intelligence. This can keep us abreast with our mounting capacity to destroy. Educating people, making them more tolerant, more understanding, and more creative thinking. This will avoid wars, and it will also aid scientific discoveries. So, if you look at that question, encouraging social forces is not mentioned. Education is given. More acceptant and tolerant. Yes, broad-mindedness. Insight and constructive thinking given. The correct answer is going to be a D. Okay? A is not given. The correct answer is a D. So we can go back and reconfirm it. It was just picked up from a line. Question number 5 from the same passage. Which of the following is, you read the question on your own. Answers. D. Okay. Others. B. पूरा पैसेज दो चीजों के बारे में बात कर रहा है. The two important keywords, science and war. He says science can be constructive or destructive both. When it is associated with war, it's destructive. That means both are related. Okay. B says neither science nor the weapons add to the horrors of war. Science and its weapons can add to the horrors of war. It makes destruction even worse. The first paragraph stated that. B is not implied in the passage. I hope you read this. I was about to read the question, but I did not, because you are supposed to point this out.
एक्सेप्ट नॉट ये वर्ड्स आप मिस नहीं कर सकते. दिस कुड बी द सिलिएस्ट एरर यू कुड डू टू योरसेल्फ. ये दोनों रिलेटेड है एंड ये एक्चुअली बोथ ऑफ द थिंग्स कैन इंक्रीज द हॉरर्स ऑफ वॉर, मेकिंग इट मोर horrible and destructive. B is not given in the passage, thus this is the correct answer. Okay. D says the role of science in ensuring world peace is subsidiary to that of man. Yes, absolutely. Man is more important here. The role of science is subsidiary. It ensures, it supports there. Okay. So D is implied indirectly. B is absolutely opposite. Question number 6, everyone. What urgent question does the passage pose in the light of the bomb of Hiroshima? Answers, everybody. Okay, Devishri. All right, Ranjana. Okay, Amit, Tanushka, everyone says a C. The correct answer indeed is a C. He says, let's go back and quickly read that extract. He says, जब ये हिरोशिमा में हुआ ना, उसके बाद मुझे लगने लगा कि हमारे पास बहुत कम टाइम है. बहुत कम टाइम है बिकॉज डिस्ट्रक्शन एंड वॉर बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है. ऐसे केस में हम बहुत लेट हैं और काम स्टार्ट नहीं हुआ है. That means the urgent question the author puts up is, can education, tolerance, creative thinking can help us meet the pace with which destruction and wars are running? We have to meet them, and these things can help us. So the urgent question that the author puts up, you might think that it is ethical implication, because when a scientist makes nuclear weapons, maybe it's not ethical. I'm sure you've seen a lot of documentaries on that. No, the urgent question is the ability of education and tolerance, and are they able to keep abreast with the capacity of people, with the capacity the war has to destroy? That's the question. If education and tolerance and creative thinking can help us or not. So see, directly given as a question. Yes. Yes, what happened? Live officially? Please tell me. C is the answer. Question number 7. Do we have a question? Yes. Without using Google. Replace the underlined word with an appropriate option. हाँ, 2 हाई है क्योंकि पेपर बहुत इजी था. Category general, life officially. थोड़ा ट्रिकी है. लेट मी बी ऑनेस्ट. बाकी 2 दिन और बच्चे, रिजल्ट आने वाला है, क्यों चिंता कर रहे हो यार? AILET अच्छे से दो, देखी जाएगी जो होगी. कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, है ना? All right. Perverted. A, Devishri? It's a guess. It is A. You're absolutely right. It is A. देखो, perverted is like twisted. उसको आप concoct करते हो, आप change करते हो, एक तरीके से. Just a minute. So it is found that when there is peace, science is constructive, and when there is war, science is perverted to destructive ends. Twist करके किसी और तरफ ले जाना. ठीक है? Warped exactly is twisted. It is an exact synonym to. It does not stop to destruction or obviate. Obviate मतलब सामने सामने दिख रहा है सबको. It's open in the wide. Suppress is to put it down. No, it's warped, which means perverted, which means to twist. Okay? Absolutely. Elimination will help you with that. Exactly. Correct. So we're done with passage number 2, everyone. Are you ready for the third passage? It is a little longer.
then the remaining two, because AILET can give you passages of varied length, and we had to do it in the marathon. It also has some grammar questions apart from the figure of speech question we did. So, you ready for the third passage a little longer? But before that, did you hit the like button, everyone? I have some new joining with me. Everyone who joined me just now, who did not hit the like button, you have to do that right now. If you are watching this video recorded later on, make sure you comment under the video and tell us that we're doing a very good job and that you need more marathons like that. Even tomorrow, we could do one more. So, make sure you comment under the video as well. Thank you for liking, subscribing, and commenting. Here comes our third passage of the day. Don't forget to join us for a detailed AILET analysis with the answer key and predicted cutoffs on 10th, immediately after the exam. Passage number 3, read the page and send me done, spans over 3.5 pages. Yes, there is a chance life. Page 2. Page 3.
Page 4. Yes, very good, Rashmi. I hope we're done with the last page of this passage. Let's come to question number 1. What's your answer? I think the options are close here. A, B, others? A, A. And I have only 2 people getting it correct, and they are Sanya and Siddhant and Hitesh. It's a B. चलो अब आगे बढ़ने से पहले पैसेज समझते हैं, ठीक है? So he says this video wave that everyone is inclined. Simple, like watching Instagram reels, constantly scrolling. Looks like I've used a lot of Instagram with the look of my thumb. No, that's not true. So just watching random videos, the author is absolutely critical towards that. And he says it bears a large responsibility for the declining interest in reading. He says because of the video wave, young do not want to read. Now, why do they not want to read? One, because reading is an acquired habit. And the author says kids take a lot of time to read. In the next page, it's written, right? Kids take a lot of time to read. So they say reading is boring. And the solution he provides is that you need to practice. The more you read, the better you're going to get with reading, the more you're going to like the books. That means if you come to question number 1, he does not have a problem with video replacing traditional stories. He has a problem with kids not knowing, they don't even know how to read properly because they have a solace they find in movies. It's easier to watch than to read. I'm sure all of us have been there, right? Because initially when we started reading, we found it difficult. And if I give you a mobile phone to watch a video, you would always prefer that because it takes up less amount of energy. So his problem is that this video wave is not letting kids how to learn how to read properly. All right? It cannot be A. It's not replacing traditional stories. Stories की नीड तब भी थी, आज भी है, और वो नीड बच्चे वीडियो से फुलफिल कर लेते हैं. जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम में, what is that? All of that is fiction, right? Most of it is fiction. So, fiction is there. Stories are there. It was there in the traditional ones. We read Mahabharata. Sundays को क्या करते थे? रामायण देखते थे बैठ के आती थी तो, है ना? So, और whatever fiction जो आप देखना चाहते हैं, अलिफ लैला when I was younger. So, yes, हम stories देखते थे. Stories आज भी हैं videos के form में. That's not the main concern of the video wave. Okay, B is the correct answer. Let's go to question number 2. Dramatized fiction is different from written fiction because
Dramatized fiction is different from written fiction because yes, Parth, that happens, of course. D. Yes, the paragraph spoke of imagination. He used to think that movies are a good way, that it will urge you to read the book even better, but he said no, visual images drown the imagination. किसी और ने सब कुछ इमेजिन कर लिया, कैरेक्टर पोर्ट्रे कर लिया है, वो सब कुछ उसके बारे में इमेजिन कर लिया जो इमेजिनेशन आप करते हैं अगर आप बुक पढ़ते तो. That's exactly why so many people say don't watch this movie, read the book. Or if you want to watch the movie, read the book before you watch the movie so that you have an imagination in your own head, because the video will kill your imagination. So it doesn't require the use of imagination. You're just watching it. Imagination is already done by somebody else. All right. Next question. Question number 3. What tends to put children off reading fiction? We discussed the answer. What tends to put children off reading fiction? Their own reading deficiency. They're not adept with reading skills. They read slow and then they find it boring. So नहीं पढ़ते हैं वो movies देख लेते हैं. It's their own. Okay? Just a minute, guys. One minute, guys. ठीक है. So, what was your statement? ठीक है. B is the correct answer. They lose interest because of their own deficiency. And then they say books are boring. Question number 4, everyone. What has the writer changed his opinion about? We discussed it. He believed something and then later on he said, no, I was incorrect. What why has the writer changed his opinion about? Correct answer. Yes, they can read but can't interpret because the speed is too slow. So they don't, the fiction books, they don't interest him. The readers, kids. What has the writer changed his opinion about? B. A. It's not the children's influence. Opinion tha about book, about movies. He thought that movies, I used to think that filmed version of enjoyable books were a spur to reading. आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं और बुक्स पढ़ूंगा फिर मूवीज देखूंगा बट ऐसा हुआ नहीं. I changed my mind. Visual images drown the imagination. It kills the imagination. He changed his mind about that. तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. अब बताइए क्या होगा आंसर? A. The influence of parents? No. The effect of film stories on children. He changed his mind about that. He said, no, effect will not spur reading. It reduced reading because there was no imagination involved. B is the correct answer. Question number 5. Here we go. Purpose of this article. Quickly. Purpose of the article. To analyze the difference between dramatized fiction and real fiction, to criticize parents for failing to encourage children to read. No, it's C. To urge greater concentration on developing children's reading skills. पूरा पैसेज कह रहा पढ़ो भाई books पढ़ो. Boring लगते है तो भी पढ़ो. Practice will make you better with it. But books are very, very necessary. This video wave has swept too far.
He discourages you to watch videos and encourages you to read. It's like I wrote the passage, reiterating my thoughts. C is unanimously the correct answer. Question number 6. Question number 6, everyone. Choose an appropriate synonym for the underlined word. This is leading to a generation whose mental processes are stultified. D. D. Yes. Here, it's a generation who watches videos, eats only when the mobile phone is on with Coco Melon. Their mental processes are delayed. Impede is stultified. There's a hindrance in it. Their mental processes have speed breakers. Correct answer is a D. Cultivate and foster are the opposite. Abet also is a an opposite word. It's like to help. Watching video will not help your mental processes. It will stop the growth of your mental processes. So D. And that was all for my end for AILET today. I'm going to be transferring the session to the next faculty, but make sure you do a few things. The moment you're out of the exam hall, I want you to come live and watch our detailed analysis with our predicted cutoffs. So ensure that you join us on 10th of December immediately after your exam. I'll be sharing a short video with you with a few reminders today. So make sure you watch that too on our YouTube channel as well as our Instagram. And 2 p.m. our analysis starts. So we'll discuss section wise the difficulty level, answer key, all of that expected cutoff. So ensure that you join us. Also, we have our marathon happening today and a bit of it happening tomorrow as well. If you are preparing for other low entrance tests like CLAT and MHCT, we have loads of tests on our test series. You can still avail that for a very, very nominal cost. Do that right away. Register yourself for our test series. For 2025 aspirants, we have a new batch coming up right this week. Register yourself as soon as possible. We shall see you in the classes very, very soon. The sooner you start, the better it is going to be for you. All right, so on to you, the next faculty, everyone. Stay live. Here we go. Thank you so much, everyone. Hello everyone, there was some technical issue and I was not sure whether I was live or not. Let me know in the chat box everybody. क्या you guys are able to see me? आवाज़ आ रही है साफ साफ तो जल्दी से बता देना. Though I think now I am visible है ना. तो this session last तक देखना है, very important. I would take up one question that last year created a lot of problems, last to last year in fact, and बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया था कि इसका आंसर कैसे निकलेगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर इस साल ऐसा कुछ आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल.
आप उसको बिल्कुल एंड तक देखना. एंड सेकेंड थिंग, वी वुड ऑल्सो टेक अप क्वेश्चंस विच लुक डिफिकल्ट बट कैन बी डन ईजीली. और अगर ऐसा कुछ इस साल आता है तो आप क्या करोगे वगैरह वगैरह, वो डिस्कस करेंगे, है ना. तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन. प्लीज स्टे टिल द वेरी एंड. ओके, चलो लेट मी सी कौन कौन आ गया भाई. आई कैन सी पार्थ, हितेश, सानिया, देवीश्री, नम्रा, दीक्षा, बहुत सारे लोग लोग दिख रहे हैं मुझे. सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, इन केस आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही हो तो. वैसे मुझे तो नहीं हो रही है. चलो, so this is the last session on logical reasoning before AILET. Now remember, I have been talking about it for last entire week. I have talked about these important points multiple times. मैं repeat कर रहा हूँ. AILET is known for creating new kind of questions, throwing some surprises at students. तो इस साल भी कुछ ऐसा हो सकता है. Go with that mindset. डर के नहीं जाना है, बट एक्सपेक्टेशन के साथ जाना है कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मैं करके आऊँगा या आऊँगी, बट समथिंग न्यू कैन बी थ्रोन एट यू. तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. द आंसर विल फॉलो द क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन अगर आप समझोगे नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्लीज डोंट गेट स्टक देयर, लीव एंड मूव अहेड. देयर वुड बी इनफ इजी क्वेश्चंस स्प्रेड अक्रॉस द पेपर. तो आपको क्वेश्चन ढूंढना है और आंसर करना है. इजी और मॉडरेट पहले करना है, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को बाद में करना है. इफ़ यू थिंक कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा, मूव अहेड, आगे कुछ इजी मिल सकता है, राइट. सो प्लीज़ डोंट गेट स्टक एट एनी कॉस्ट. कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना. इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द आंसर विद इन द फर्स्ट मिनट और सो, आपको लगता है इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी फंस गया हूँ, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ. आई नो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल लगता है, बट कोई चारा नहीं अपने पास, है ना. कौन सा चारा है. एंड इफ अ क्वेश्चन लुक्स नॉन फेमिलियर, कभी पहले किया ही नहीं, लीव इट, मूव अहेड, एंड तक पहुंच जाओ एंड देन कम बैक, राइट. आपको मार्क्स निकालने हैं, आपको सेक्शन के बारे में नहीं सोचना है. यू हैव टू जस्ट गेट फुल मार्क्स, और रादर एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल. तो सेक्शन का कोई टेंशन तो है नहीं. सो प्लीज़ की मूव अहेड, एंड आप जब हो सके तो लास्ट की तरफ आके फिर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर देना. ओके, एंड कुछ देर तक बैठे रहोगे, कुछ देर तक क्वेश्चंस को देखते रहोगे, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग ओके. तो इनिशियल शॉक लग सकता है, बट डोंट पैनिक. पैनिकिंग इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम हियर इन दिस पेपर. बहुत लोग घबरा जाते हैं, दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल, है ना. एंड लास्टली, प्लीज एलिमिनेट. इन क्वेश्चंस में याद रखना, एलेट स्पेशली इज फेमस फॉर एलिमिनेशन. अगर आपको आंसर नहीं सूझ रहा, कोई बात नहीं, आंसर क्या नहीं हो सकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. चलो भाई, लेट मी लुक एट द chat also. So, good afternoon everyone. Devansh, Rashmi, Abhishek, I see some new names also. Good good morning. And अभी तो आफ्टरनून, अच्छा हो गया, आफ्टरनून हो गया. हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलो भाई, लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी नहीं करते. This is strictly, remember, this is not strictly critical reasoning question. This is a strictly speaking, it is more like a verbal logic या logical reasoning question कह सकते हो. I generally don't teach these questions, but I thought एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल किया जा सकता है, राइट. सो यू गाइज फर्स्ट ट्राई इट. अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, आंसर बता दो, और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे एग्जाम में करना है. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस विल टेक सम टाइम, प्रॉबेबली 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट तो लग ही जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स को 1.5 मिनट भी लग सकता है, बड़े आराम से. तो एक बार आप ट्राई करके देखो, एंड फिर बात करते हैं, है ना. चलो, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एंड चैट भी देख लेता हूँ तब तक. ओके, so the question says a school principal must schedule classes for 5 subjects in accordance with the following conditions. और conditions given है: all subjects except music must be scheduled at least once a day. Science must be scheduled immediately after maths on any day. English cannot be the first or last subject. Social studies cannot be immediately followed by music. Music cannot be immediately followed by social studies. और आपको बताना है, if English is the second subject, which of these is a possible order of subjects for that day, है ना. तो आपको ये आंसर निकाल के बताना है. तो ट्राई करके देखो, आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी चलेगा, बट यू मस्ट ट्राई दी आंसर. चलो, आंसर्स आने लग गए. पार्थ सेज ए, देवांश सेज बी,
बट आई विल वेट फॉर एवरी वन टू रिस्पॉन्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं. लेट सी कि कौन क्या आंसर देता है. सम ऑफ यू आर सॉल्विंग होपफुली. अभी तक सिर्फ दो आंसर्स आए हैं. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. कुछ लोगों ने हिम्मत हार के क्वेश्चन ही छोड़ दिया, या कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट अगर सॉल्व कर रहे हो तो. पृथ्वीराज सी, कशिश सी, पृथ्वीराज. हाँ, पृथ्वीराज कितनी बार आंसर देगा. देवीश्री डी, तनुष्का सी, नम्रा सी. नम्रा, वाई इज द आंसर सी? कुछ बता सकते हो मुझे? तनुष्का, वाई इज इट सी? सानिया, वाई इज इट सी? कशिश सी. देवीश्री सेज नॉट डी, सी. ओके. नाउ रिमेंबर एवरीवन, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास, राइट. वन इज कन्वेंशनल तरीका है, वेयर यू स्टार्ट बाय राइटिंग 4 सब्जेक्ट्स. करेक्ट. देन यू से अच्छा इंग्लिश यहाँ नहीं हो सकता, इंग्लिश यहाँ नहीं हो सकता. देन यू थिंक वैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं. लेट मी स्टार्ट विथ राइटिंग 5. वैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं. म्यूजिक रोज नहीं होता है. ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट म्यूजिक मस्ट बी शेड्यूल्ड एटलीस्ट वंस अ डे. मीन्स कि 4 सब्जेक्ट्स रोज होंगे एटलीस्ट एक बार, और म्यूजिक कर भी सकते और नहीं भी कर सकते. सो देर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स. इंग्लिश यहाँ नहीं हो सकता. फिर आपको सोचना पड़ेगा ऐसे, है ना. फिर आप सोचोगे जैसे कंडीशन, सोशल स्टडीज या तो कैनॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय म्यूजिक. सोशल स्टडी और म्यूजिक एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते. एंड म्यूजिक के इमीडिएटली बाद, म्यूजिक कैनॉट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सोशल स्टडीज. म्यूजिक के बाद भी सोशल स्टडीज नहीं आ सकता. तो ये सब करना पड़ेगा आपको, है ना. बट एक और शॉर्टकट तरीका है. व्हाट इज दैट? एक बार जरा चैट देख लेते हैं. एब्सोल्युटली नम्रा, वेरी गुड. एब्सोल्युटली सानिया, वेल डन. बिल्कुल सही बात. तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है शॉर्टकट, एक होता है छोटा शॉर्टकट. अपने को छोटा शॉर्टकट पकड़ना है. क्वेश्चन कहता है कि भैया साइंस मस्ट बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर मैथ्स. साइंस और मैथ्स का साथ रहेगा जन्मों जन्मांतर तक, अगले 7 जन्म तक. साइंस के बाद मैथ होना ही चाहिए. खत्म कहानी. ढूंढते हैं साइंस के बाद मैथ. यहाँ नहीं है. साइंस के बाद मैथ नहीं, साइंस के बाद तो इंग्लिश है. साइंस के बाद मैथ. साइंस मस्ट बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर. ओह माय मिस्टेक. मैथ के बाद साइंस, साइंस मस्ट बी शेड्यूल्ड आफ्टर, है ना. तो मैथ के बाद साइंस नहीं है. मैथ तो यहाँ मैथ ही नहीं है. मैथ के बाद साइंस है. मैथ के बाद इंग्लिश है. हो गया आंसर. कितना मुश्किल था क्वेश्चन. करेक्ट. सो इट्स एज सिंपल एज दिस. क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर बिल्कुल छोटा. नाउ यू माइट से कि सर ये एग्जाम में क्लिक करेगा. हो सकता है. कैसे? if you have done this question, next time if you see a question like this, at least it will strike your head कि अच्छा एक बार जरा ऑप्शन ही पढ़ लेता हूँ. कंडीशंस देख के ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं. सो इन प्लेस ऑफ क्रिएटिंग द लिस्ट, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखो, शायद उससे हो जाए. बट इफ यू कांट डू इट इन 60 सेकेंड्स, तो पता ही है क्या करना है. आगे चलो, बढ़ते जाओ, है ना. आगे बढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया? Kashish is saying what? Let me check. All 4 except music should be there. A and B eliminate हो गया. नहीं 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 कशिश, नो. म्यूजिक नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा है. चारों सब्जेक्ट्स होंगे एटलीस्ट एक बार म्यूजिक के अलावा. यानी म्यूजिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो आप म्यूजिक से एलिमिनेट नहीं कर सकते. मैथ एंड साइंस से कर सकते हो. इज दिस क्लियर कशिश? ऑल राइट, चलो भाई. अब ये मज़ेदार बात है. मज़ेदार बात क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ना देके उस क्वेश्चन को इजी कहना, ये काफ़ी मज़ेदार बात है ना. चलो, ये जीनियसेस का साइन है. ऑलराइट एवरीवन, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्लाउड बर्स्ट caused extensive damage to roadways around the town, making them unsuitable for heavy vehicles such as trucks and buses carrying more than 20 people.
As a result, the villagers are being extracted by air. The roadways cannot be mended until everyone is extracted safely. Based on the information above, which conclusion must be true? है ना, कौन सा, जल्दी बताओ. This is AILET 2022 question, everyone. कौन सा होना चाहिए? Must be true. वैभव क्यों दोगे, मतलब मुझे समझ नहीं आया. अच्छा, पीजी लिखा है तुमने, ओके. हाँ वैभव, यू कैन डू दैट. यस. अर्जुन ने लिखा है रश्मि पवार हियर. सो अर्जुन, यू मीन यू आर रश्मि, है ना, तुम हैंडल अर्जुन का यूज कर रहे हो. अच्छा. बी पृथ्वीराज सी. अरे तो लड्डू सवाल है. नम्रा बी, क्रिप्टन सी, देवीश्री बी, सानिया बी. ओके. गिटार विद सिद्धांत बी. सिद्धांत को गिटार इतना पसंद है, उसने अपने नाम में जोड़ लिया, टैटू वैटू करवा लिया. बहुत बढ़िया. इवन आई लव गिटार. बजाना नहीं आता बट बहुत पसंद है. रंजना बी, देवांश बी, क्रिप्टन बी. अच्छा, क्रिप्टन ने आंसर चेंज कर लिया. पहले कुछ और दिया था. क्या दिया था पता नहीं. अर्जुन, अच्छा अर्जुन इज रश्मि. ओके, अर्जुन ही रश्मि है. चलो सब एवरीवन, लेट्स चेक इट. कंक्लूजन मीन्स, एवरीवन रिपीट करते हैं. कंक्लूजन मीन्स बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई कैन से दैट द कंक्लूजन इज 100% ट्रू. देर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना. ऑप्शन 1 कहता है मटीरियल्स फॉर मेंडिंग द रोडवेज विल हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई एयर. क्यों? Unsuitable for heavy vehicles such as trucks and buses carrying more than 20 people. एक्सटेंसिव डैमेज हो गया है रोडवेज को, तो अब अगर अभी के अभी लेके आएंगे तब तो रोडवेज को रोड से नहीं ला सकते, है ना. नहीं ला सकते, अग्रीड, रोड से नहीं ला सकते. बट हवाई जहाज में लाना पड़ेगा, रोड से नहीं ला सकते. मोर देन 20 पीपल कैरी करने वाले ट्रक में नहीं ला सकते, नो प्रॉब्लम. तो घोड़ा गाड़ी में ला सकते हैं, खच्चरों पे लाद के ला सकते हैं. ला सकते हैं, छोटी गाड़ियों में ला सकते हैं, टाटा का छोटा हाथी, टेम्पो में ला सकते हैं, ई रिक्शा पे ला सकते हैं. हवाई जहाज से लाना पड़ेगा, ज़रूरी है क्या? नहीं. 100% ट्रू थोड़ी ना है. नो पर्सन और व्हीकल इज एंटरिंग द टाउन वाया रोडवेज. अरे 20 लोगों को, 19 लोगों को ले जाने लायक गाड़ियां तो जा ही रही है ना. ट्रक्स और बसेस कैरिंग मोर देन 20 नहीं जा सकते. तो लोग आ रहे होंगे, पैदल आ रहे होंगे. तुम्हें क्या लगता है, मतलब नो पर्सन और व्हीकल इज एंटरिंग द टाउन वाया रोडवेज. रोडवेज मतलब लोग रोड से नहीं आ रहे, पैदल नहीं चल के आ सकते, घोड़े पे बैठ के नहीं आ सकते, सफ़ेद घोड़े पे बैठ के बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह, है ना. चल चल के आ सकते हैं, तैर के आ सकते हैं. मतलब रोडवेज में तैरना नहीं आएगा. खच्चर पे आ सकते हैं, घोड़े पे आ सकते हैं, ई रिक्शा पे आ सकते हैं, साइकिल पे आ सकते हैं, टांगे पे आ सकते हैं. तुम्हें कैसे पता कि वो आ ही नहीं रहे? कैसी बात कर रहे हो? द विलेजर्स वुड हैव यूज ट्रक टू लीव द टाउन इफ द रोड्स वर नॉट डेवलप्ड. तुम विलेजर्स के दिमाग में घुस गए हो, उनके आत्मा के अंदर घुस गए हो. विलेजर्स कैसे जाते गांव छोड़ के, तुम्हें पता चल गया है? कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. तो आंसर क्या होगा? डी होगा ऑब्वियसली. इतना आसान क्वेश्चन, इससे भी गड़बड़. इज दिस क्लियर? अर्जुन काफ़ी लेट आंसर दिया तुमने. तुम्हारा आंसर वैसे सही है बट काफ़ी लेट है. बहुत बढ़िया. गिटार विद सिद्धांत कहता है मुझे गिटार बजाना भी आता है. क्या बात, गिटार. दिस इज़ वन अनफुलफिल्ड डिज़ायर अभी तक मेरे अंदर, है ना. सीखूंगा मैं अभी किसी दिन सिद्धांत, फिर जैम करेंगे हम बैठ के. मतलब सोच रहा हूँ मैं ऐसा. पार्थ डी. सो इज इट क्लियर एवरीवन? पल्ले पड़ा? कितना आसान सवाल तुमने गलत कर दिया. इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करो. कितनी बार सिखाया है? 11,569 टाइम सिखाया अभी तक, फिर भी गलत कर देते हो. चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं. आ गया आपके सामने अगला सवाल.
इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने गलती की तो आपको थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा कि यार ये मैंने बड़ा ही लड्डू सवाल गलत कर दिया। एंड रिमेंबर इन एन एग्जाम लाइक एलेट हर एक सवाल पे बवाल हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल। तो अर्जुन, तुम अर्जुन हो युद्ध के मैदान में, तुम क्यों दूसरों की बातें सुन रहे हो, है ना? सिर्फ कृष्ण की बात सुनो। मतलब समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, बट कुछ तो अच्छा बोला है ना। अर्जुन हो तुम, चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस रखो। अर्जुन इज सेइंग मैं सबकी बातें सुन के भटक गया। अरे तुम्हें चिड़िया की आंख पे फोकस रखना है, और तुम बाकी बाकी लोगों की बातें सुन रहे हो। रश्मि है, सिद्धांत कहता है डन। ओके, पारस कह रहा है डी। चलो भाई, पारस कह रहा है तो सही होगा। कशिश कह रहा है डी। नहीं, कशिश कह रहा है, कह रही है, आई हैव नो आइडिया, सो दोनों। चलो भाई, लेट्स सी। भूमिका से डी। रंजना डी। क्या इतने सारे डी कह रहे हैं तो सही होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, सही बात। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ स्पीच सच एज हेट स्पीच, सेडिशन, डेफेमेशन आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच कंक्लूजन इज 100% श्योर, ऑब्सीन स्पीच इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको आउट कर दो। यानी आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डेफेमेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कोई इन्फॉर्मेशन है? नो। अब यहाँ पे अपना ज्ञान मत लगा देना, दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड भी आउट हो गया, यानी आंसर बचा डी। हो गया डी, कितना आसान क्वेश्चन है। ऑल दिस फ्रॉम एलेट। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम मेकिंग, है ना? मैं पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली गाना गा रहा हूँ कि एलेट में यस सवाल मुश्किल आते हैं, बट सारे नहीं आते। कुछ मुश्किल होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। आपको मॉडरेट और इजी वाला करना है, यू हैव टू फोकस ऑन इजी एंड मॉडरेट, है ना? कशिश, अच्छा आप समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया एवरीवन, इस तरह से तुम लोगों ने सही आंसर करना शुरू किया तो 15 मिनट में हमारा मैराथन खत्म हो जाएगा। मैराथन बन जाएगा 2 किलोमीटर की रेस, 42 किलोमीटर की जगह पे। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। चलो, पारस ने बोला नहीं, अर्जुन ने बोला डी। अर्जुन, आई थिंक यू आंसर्ड राइट। डी। पारस ने बोला ए पृथ्वीराज, ए भूमिका, डी क्रिप्टन, ए मानवी, ए। देखो अब सब के सब तो सही हो नहीं सकते, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। ना ऑल ऑफ यू कैन नॉट बी करेक्ट, है ना? तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ तो है। बोथ लुक एक्सट्रीम ऑप्शंस। अर्जुन, गुड पॉइंट अर्जुन, बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हें अर्जुन ही बोलूंगा, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा। रश्मि है आई नो, बट अर्जुन ही बोलूंगा। बहुत बढ़िया अर्जुन, वेरी गुड, अब तुमने सही तीर चलाया। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, इट सेज नेसेसरली फॉलोज, इट सेज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब नेसेसरी, नेसेसरी मतलब ओनली, है ना? Statistically proven that those who play sports suffer from less stress than those who do not play sports. अब ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज ए है और बी है, ओके? वर्ल्ड में ऐसा मानते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। वर्ल्ड में ऐसा मानते हैं, डॉक्टर्स बिलीव दैट 120 लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ओके। ऐसा कुछ होता नहीं है, आई एम जस्ट इन्वेंटिंग इट राइट ऑन द स्पॉट। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लेते हैं कि 120 लेवल ऑफ स्पॉट, इसको कुछ यूनिट दे देते हैं। 120 टेंशन टी, 120 टी स्ट्रेस इज ओके, ऐसा दुनिया डॉक्टर्स मानते हैं। सपोज ए हैज़ 220 टी टेंशन एंड बी हैज़ 210 टी टू टेंशन स्ट्रेस, तो बी का तो स्ट्रेस कम है, लोअर देन ए, बट डज इट मीन ये हेल्दी रहेगा? नहीं ना।
स्टैटिस्टिकली कहता है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको लेस स्ट्रेस होता है, बट मे बी दोनों ही ऑलरेडी खतरनाक लेवल ऑफ स्ट्रेस पे हैं, ये तो हो ही सकता है। इनफैक्ट रेगुलरली प्लेइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड, मतलब लिंक है, विद एन ओवरऑल हायर लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ। अगेन हायर लेवल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप किसी और से बेहतर हैं, हो सकता है दोनों ही अदरवाइज बेकार हो। फर्दर, आउटडोर स्पोर्ट्स आर एसोसिएटेड विद बेटर मेंटल हेल्थ दैन इंडोर स्पोर्ट्स। आई होप यू गाइज कैन सी दैट अगर मुझे कंडीशन कंक्लूजन निकालना है नेसेसरली ट्रू, all that I know here, all the information here talks about maybe। जो खेलता है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, जो खेलता है उसके साथ ऐसा कम होता है। हमें चाहिए नेसेसरी आंसर। ऑप्शन 2 कहता है नेवर फेस एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये तो पक्का आउट हो जाएगा। और ऑप्शन 1 कहता है स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ। मे बी, बट अगर आप ऑलरेडी आप तकलीफ में हैं तो हो सकता है स्पोर्ट्स करके भी कोई फ़ायदा ना हो। तुमने मार्केट से 2,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से निकाल चुके हैं, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें देखकर डंडा मारते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स खेलने से फ़ायदा होगा? मे बी नॉट, राइट? एंड देयरफॉर दिस अगेन इज नॉट नेसेसरली ट्रू, इट्स अ पॉसिबिलिटी, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर एवरीवन? पल्ले पड़ा, समझ आया? जल्दी जल्दी बताओ। पार्थ बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, सो गुड मेंटल हेल्थ कैन बी एक्वायर्ड थ्रू मेडिटेशन, योगा और ड्राइविंग अ BMW, है ना? कुछ भी हो सकता है इसमें से। भूमिका सेज ऑप्शन 1 में एसेंशियल की जगह क्या होता तो आंसर सही होता। देन आई हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, मे बी आई कैन राइट स्पोर्ट्स आर conducive towards maintaining good health, sports can contribute, sports are associated, sports may, ऐसा कुछ लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। बट एसेंशियल तो नहीं है, ओनली लिख दोगे तो कैसे चलेगा, वैसे भी एक्सट्रीम हो जाता है। ऑल राइट एवरीवन, अगला सवाल आपके सामने। आदित्य, चेक करने दो मुझे। एक बार चेक करके आई विल हेल्प यू। Yes, Aditya, very fat chance, very good chance, not fat chance, very good chance actually. Aditya Ramakrishnan, okay, very high chance. Well done, good chance. Hmm. Yes, Kashish. Any, every, each, 100%. All these mean all. Okay. Any car is black, मतलब सारे कार black है. Any of your friend is useless, तुम्हारे सारे फ्रेंड यूजलेस है, ऐसा हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, है ना? चलो, नम्रा से इस पल्ले पड़ा सर, क्या बात नम्रा, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई जान के। डी 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 अगेन डी, अरे तुम लोग स्मार्ट हो गए क्या अचानक से? Since their inception in 70s, video games have often been criticized by some for violent content. Politicians, parents, and other activists have claimed that violence in video games can be tied to violent behavior. However, numerous studies have failed to find any connection between video games and violent behavior. Conclusion निकालना है, necessarily follows. Option 1 कहता है video games have no relationship. यहाँ कहता है they have failed to find any connection between video games and violent behavior. Video games have no relationship with violence. तो ऑप्शन 1 देख के लगता है ट्रू होगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। इट सेज न्यूमरस स्टडीज have failed to find any connection. Does it mean there is no connection? Can't say. Maybe those studies have failed, but there is a connection. लोग तो कभी भी कह रहे हैं ना, तो इट इज नेसेसरी नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है। वीडियो गेम्स मे नॉट हैव अ रिलेशनशिप, मे बी,
बट डज नॉट हैव रिलेशनशिप, कांट से दैट, है ना. बेटर स्टडीज नीडेड, अरे ये तो रिकमेंडेशन है. रिकमेंडेशन कहाँ से आ गया इसके अंदर? कंक्लूजन में बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन देयर इज नो रिकमेंडेशन मेड एनीवेयर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी. ऑब्वियसली. बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही बोल दिया, है ना. ऑल राइट, गिटार विद सिद्धांत क्लियर है, ये नहीं होगा इस पे. स्टडीज ने, काफ़ी सारे स्टडीज ने बोला है कनेक्शन नहीं है, बट कैन वी से नेसेसरीली ट्रू है कि कनेक्शन है ही नहीं? मे भी कनेक्शन है, उन स्टडीज को नहीं मिला. सो लेट मी चेंज द क्वेश्चन. 5 लोग जंगल गए शेर ढूंढने, शेर नहीं मिला. कैन वी से शेर नहीं है जंगल में? क्या पता तुमने बोला नहीं और बाजू में बैठा मिल गया, है ना, हो सकता है. उन पांचों को नहीं मिला, तो नेसेसरली नहीं बोल सकते. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन रिमेंबर लास्ट ईयर 22 में आया था. A lot of students got stumped, completely stumped in this question कि क्या हो गया हमारे साथ. Will not happen with you guys, but अगर होता है तो I'll help you, or maybe it will be useful in the exam also. तो पहले आप आंसर बताओ, फिर बात करते हैं, है ना. इस क्वेश्चन में बहुत लोग झटका लग गया था कि ये क्या हो गया हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है ना, लगता है हमें घर वाले निकाल के ही दम लेंगे, समथिंग लाइक दैट. चलो बताओ आंसर. हितेश जल्दी से आंसर बताओ तुम, शेर बाद में ढूंढना. पृथ्वी राज ए, नम्रा डी. नम्रा तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तुमसे उम्मीद थी कि तुम सही आंसर बताओगे. थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ. भूमिका शर्मा वेरी गुड ए. इफ यू गाइज हैव डन क्लासेस विद मी देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, बिकॉज ये मैंने बताया हुआ है क्लास में. सानिया डी, रंजना ए, क्रिप्टन ए. देखो जिन्होंने कॉन्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया. हितेश डी, तनुष्का ए, है ना. इस क्वेश्चन ने थोड़ा हिला दिया था बच्चों को. मैं बता देता हूँ जल्दी से. पार्थ ए, देवीश्री ए. वेरी गुड, वेल डन गाइस, सम ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर, बहुत बढ़िया. सम लैपटॉप्स आर चॉकलेट, सम लैपटॉप्स आर चॉकलेट्स. ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, तो टॉफी भी चॉकलेट है, बराबर. सम लैपटॉप्स आर टॉफीज, सम लैपटॉप्स आर टॉफीज, मे बी नॉट. नो टॉफीज आर लैपटॉप, नो टॉफीज आर लैपटॉप, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, अगर अलग अलग रख दूँ तो हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं हो सकता. ऑल टॉफीज आर लैपटॉप्स, ऑल टॉफीज आर लैपटॉप्स, हाँ हो सकता है. सपोज आई टेक द टॉफी एंड कीप इट हियर, फिर तो हो जाएगा. तो ये भी हो सकता है, बट श्योर नहीं है. ऑल लैपटॉप्स आर टॉफीज, ऑल लैपटॉप्स आर टॉफीज, सारे लैपटॉप टॉफी के अंदर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट श्योर थोड़ी ना है ना. रिमेंबर एवरीवन, इसी इसी स्टेटमेंट्स को आप एक और तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सब लैपटॉप्स और चॉकलेट को ऐसे कर लो. ये लैपटॉप है और ये टॉफ़ी है ना. सो यू कैन स्टिल सी दैट सम लैपटॉप्स आर टॉफ़ी. ऑल लैपटॉप्स आर टॉफ़ी का मतलब सम आर ऑल्सो टॉफ़ी, तो ये भी हो गया. एंड ऑल टॉफ़ीज आर चॉकलेट, तो टॉफ़ीज़ को चॉकलेट के अंदर डाल दो. तो अब देखो क्या दिख रहा है, सम लैपटॉप्स आर टॉफ़ीज, सम लैपटॉप्स आर टॉफ़ीज, हाँ जी बिल्कुल सही है, इस केस में सही हो जाएगा. नो टॉफ़ीज आर लैपटॉप नहीं कह सकते. ऑल टॉफ़ीज आर लैपटॉप, ऑल टॉफ़ीज आर लैपटॉप दिख नहीं रहा, बट अगर मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ तो ट्रू हो सकता है, हो सकता है. ऑल लैपटॉप्स आर टॉफीज, ऑल लैपटॉप्स आर टॉफीज, हो सकता है. तो इनमें से कुछ भी आउट ऑफ दीज फोर, नो स्टेटमेंट कंक्लूसिवली फॉलोज, बराबर. यानी आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो नन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज देयर इज वन ऑप्शन विद ईदर और ईदर और के 3 रूल्स होते हैं, है ना. ईदर और कब मार्क करते हैं आंसर? देयर आर 3 रूल्स टू फॉलो. फर्स्ट इज if the options mentioned here do not follow from the given information. For example, some laptops are toffee, no toffees are laptop, दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन से. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन
बोथ ऑफ देम आर नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू हो गया। सेकेंड, दे शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मीन्स अगर इनमें से एक ऑल है द अदर शुड बी सम नॉट, अगर एक नो है तो अदर शुड बी सम, और अगर एक सम है देन द अदर शुड बी सम नॉट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं एंड लास्ट देयर टर्म्स आर सेम, जैसे लैपटॉप लैपटॉप, टॉफी टॉफी, है ना, तो इसमें लैपटॉप टॉफी था, इसमें टॉफी लैपटॉप है, टर्म भी सेम हो गए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं then the answer is either or, and therefore in this question the correct answer is either one or two। second नहीं है, क्यों? because second में third and fourth also do not follow, है ना, follow नहीं कर रहा था, but टॉफी लैपटॉप है, टॉफी लैपटॉप है, टर्म भी सेम है, but they are not complementary pair, दोनों ही all हैं। one should be all, the other should be some not, one should be no, other should be some, one should be some, other should be some not। अगर ऐसा है तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इज दिस क्लियर एवरीवन? इफ यू हैव नॉट डन दिस कॉन्सेप्ट प्लीज मेक श्योर यू डू इट। मैं पढ़ा तो नहीं सकता फिर से, बट आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इधर और का जो कंडीशन है आपको पता होना चाहिए कब मार्क करते हैं आंसर में। चलो लेट मी सी। नम्रा, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल तुम्हें ये पता है, मुझे मालूम है, बट तुमने गड़बड़ कर दिया है ना, बिल्कुल। क्रिप्टन इतना भी नहीं है, मतलब आसान सा ही है, अगर आपको रूल पता है आपको पता ही है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड्स, है ना, 2022 क्वेश्चन। ऑल राइट एवरीवन, चलो अगले सवाल पे जल्दी जल्दी। मतलब बड़े साइज का क्वेश्चन है, बट सुपर लड्डू क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आंसर करके बताओ क्या होना चाहिए। पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। इन 2008 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम्ड अ रूल स्टिपुलेटिंग दैट एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड from advertising or soliciting his work either directly or indirectly through circulars, advertisements, interviews, touts, and personal communications. The idea of the prohibition of advertising practices in the legal profession has been taken from the law in the UK, where the legal profession is considered noble and it is believed that its commercialization will cause dishonor to the profession and will lead to unfair practices. अब बताओ इनमें से कौन सा 100% सत्य वचन है? अगर ये ट्रू है तो इसमें से कौन सा पक्का पक्का ट्रू होगा? तो जल्दी से पढ़ के बताओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज द पॉइंट एवरीवन, एक आसान आता है अगला मुश्किल हो जाता है, फिर अगला आसान, तो काफ़ी इजी मॉडरेट क्वेश्चन तुम्हें एलिट में मिलेंगे। पैनिक मत करना और घबरा के छोड़ना मत, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टक मत हो जाना कि इसको तो करके दम लूंगा, इसके साथ मेरा बचपन का प्यार है और मैं इसे सॉल्व करके दम लूंगा, ऐसा मत सोचना वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो डी डी डी, कितने लोगों ने बोला डी? अर्जुन इज सेइंग डी, पृथ्वीराज इज सेइंग डी, कशिश। तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर डी आ रहे हैं, इसमें भी लगा दो, सही होगा। भूमिका बी, देवांश डी, भूमिका भूमिका ने फिर आंसर कर दिया। देवीश्री डी, रंजना डी। ओके जी, मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर, यहाँ भी देख लूँ ज़रा क्या चल रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो क्या लिखा है, 2008 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम्ड अ रूल स्टिपुलेटिंग दैट एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और सॉलिसिटिंग हिज वर्क। आई होप यू गाइस नो, अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट्स ऑफ इंडिया 1961, आप किसी भी प्रकार का काम नहीं मांग सकती। यू कांट गो ऑन टेलीविजन एंड से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा केस जीत के तुम्हें बेल करवा दूंगा, तुम्हें फांसी की सजा से बचा लूंगा। आई होप यू नो दैट राइट। तुम ये प्लान तो नहीं कर रहे ना एनएलयू से ग्रेजुएट होकर काला कोट पहनेंगे और टिकटॉक पे डांस करेंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे? मतलब बना सकते हो बट यू कांट से मेरे पास आओ। डांस कर लो गाने पे, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन ऑल्सो डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ। लॉ के बारे में लोगों को ज्ञान दे सकते हो, ज्ञानवर्धन कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज अवेयरनेस, बट यू कांट सॉलिसिट वर्क। यू कांट से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फांसी की सजा से बचाऊंगा, जाओ तुम लोग मर्डर करो मैं बचा लूंगा। यू कांट डू दैट, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो अगर ये ट्रू है तो रीड ऑप्शन 2,
लॉयर्स इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू कमांड देमसेल्व्स टू पर्सन्स लुकिंग फॉर लीगल असिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में लॉयर्स जाके नहीं बोल सकते कि मैं केस लड़ूंगा। अरे अलाउड ही नहीं है। तो बी तो ट्रू होगा ही ना। तो करेक्ट आंसर ये या तो ये है या तो ये है, ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन वन पढ़ो। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज कॉपीड द लॉ। हैं? हाउ डू यू नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉपीइंग द लॉ? मे बी नॉट नेसेसरी थोड़ी ना है। तो आउट। तो करेक्ट आंसर इज बी। हो गया आंसर। कितना मुश्किल सवाल है ये। अर्जुन, इज इट क्लियर? अर्जुन, इट इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज इज सेइंग। आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से। दैट्स द होल प्रॉब्लम। अभी बड़े सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। थोड़े क्वेश्चंस कर लो परसों। इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। देखना परसों तुम्हें सेशन याद आएगा कि अरे हाँ वहाँ पे किया था ऐसा कुछ। नॉट द सेम क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर एवरीवन? कमेंड बेसिकली मीन्स टू रेकमेंड। कमेंट का मतलब होता है रिकमेंड करना। कमेंट रेकमेंड एक ही तो है, दिख नहीं रहा। ओके, तो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया। पृथ्वीराज, कशिश, देवांश, सानिया, यू गाइस गॉट इट रॉन्ग, बट भूमिका ने सही आंसर बताया था। एक बार नहीं 3 बार सही आंसर बताया था। क्या बात भूमिका, बहुत बढ़िया। वेल डन। चलो भाई अगला सवाल, लेट्स सी। अरे सवाल कहाँ गया? अच्छा हमने कर लिया। ये भूलना मत, एलेट देने के बाद आपको ज्वाइन करना है हमें 10 दिसंबर को 2 बजे से डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीवन। ये भी 2022 का क्वेश्चन है एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर लाइक ऐसे क्वेश्चन हम क्या ही करेंगे। अरे लड्डू सवाल है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंटरप्रिटेशन लगाओ और आंसर मिल जाता है। दीज आर ऑल लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो पहले आप आंसर बताओगे, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। अर्जुन, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है। Geeta is buying 3 ice cream bars and must distribute them amongst 5 of her friends. कैसी फ्रेंड है बताओ? 5 फ्रेंड हैं इसके और 3 खरीद रही है। मे भी पॉकेट मनी में इतनी ना हो, ख़त्म हो गया होगा। या हो सकता है इसके 2 फ्रेंड्स जो हैं आइसक्रीम नहीं खाते, वो बड़े हो गए हैं, वो कुछ और खाते पीते हैं, है ना। चलो, गीता इज बाइंग 3 आइसक्रीम बार्स एंड मस्ट डिस्ट्रीब्यूट देम अमंगस्ट 5 ऑफ हर फ्रेंड्स इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। जिंदगी में किसके नाम ऐसे होते हैं सोचो जरा, ये क्वेश्चन में नाम भी नहीं डालना चाहते। सपोज यू हैव अ फ्रेंड कॉल्ड डब्लू। डब्लू इधर आ। वी, वी चलेगा खाने? वी शुड गो। क्या बेकार है। फिर कंडीशंस भी दिए हुए, मतलब 3 आइसक्रीम खरीदा गीता ने, फिर कंडीशन लगा दिया ऊपर से। इफ वी गेट्स एन आइसक्रीम डब्लू एंड वाई ऑल्सो। इफ जी गेट्स एन आइसक्रीम एक्स के नॉट। अरे हद हो गई। एटलीस्ट डब्लू और एक्स में से एक को तो मिलेगा। और एक आइसक्रीम एक ही बंदा खा सकता है, ऐसे नहीं कि एडजस्टमेंट कर लिया, आधा आधा तोड़ के बांट लिया आपस में, है ना। तू पहले खा ले, मैं बाद में खा लूंगा, तू खा, जो नीचे उसमें से मेल्ट होकर गिरेगा वो मैं खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सबको एक एक आइसक्रीम मिलेगी और 3 ही आइसक्रीम है। क्या बात है। चलो भाई बताओ आंसर, लेट मी चेक योर आंसर्स। कशिश ने बोला डी, अर्जुन बोल रहा है बी, रंजना बी, भविष्य बी, पार्थ बी, भूमिका बी, देवीश्री बी। चलो लेट्स सॉल्व इट क्विकली क्विकली। भाई दीज क्वेश्चंस जो शॉर्टकट यूज करना वो ये करना होता है कि जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है ना, क्या लिख रहा हूँ मैड, जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होता है उस पर हमेशा फोकस किया करो, उससे एलिमिनेशन बिकम्स ईजियर। ये कह रहा है 5 फ्रेंड्स हैं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन कहता है कि डब्ल्यू और एक्स में से एटलीस्ट एक को तो आइसक्रीम मिलनी चाहिए, यानी डब्ल्यू और एक्स में से एक को तो मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी चीज कहता है कि अगर वी को दिया तो डब्ल्यू एंड वाई को भी देना पड़ेगा, और 3 ही आइसक्रीम है। यानी मान लो उसने वी को दिया तो डब्ल्यू एंड वाई को जरूर मिलेगा। ध्यान से देखो एवरीबॉडी, मान लो उसने वी को दे दिया तो डब्ल्यू एंड वाई को भी देना पड़ेगा, है ना। यानी 3 आइसक्रीम बट गए। सेकेंड, डब्ल्यू और एक्स में से किसी एक को आइसक्रीम मिल रही है, दैट वाज अ कंडीशन,
कि W और X में से किसी एक को मिले, है ना। एंड लास्ट कंडीशन ये था कि अगर Z को आप आइसक्रीम देते हो तो X को नहीं दे सकते। तो मान लो उसने Z को नहीं दिया, Z को दे दिया, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं पहले। ये कंडीशन कहता है कि अगर आपने Z को दिया तो X को नहीं दे सकते, यानी ये P है और ये Q है। इफ यू हैव डन दिस, आई हैव डन दिस इन द लास्ट 3 क्लासेस, इफ P देन Q। इसमें क्या होता है, P गिव्स Q एंड नॉट Q गिव्स नॉट P। बराबर। तो ये कहता है अगर Z को दिया तो X को नहीं दे सकते, विच मीन्स अगर मैं नॉट Q का केस लेता हूं, नॉट Q का मतलब होता है नॉट ऑफ नॉट X, तो ये हो जाएगा नॉट Q गिव्स नॉट P, इससे आ जाएगा नॉट P। एंड P का मतलब है Z को दे रहे हैं, तो नॉट P का मतलब हो जाएगा कि Z को आप नहीं दे सकते, है ना। यानी इफ आई लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट, इट सेज इफ Z देन नॉट X। इसका इम्प्लीकेशन ये है दैट अगर आप Z को देंगे तो आप X को नहीं दे सकते, और अगर आपने X को दे दिया तो आप Z को नहीं दे सकते, बराबर। और 5 ही आइसक्रीम है आपके पास, V W X Y Z। तो शुरू करते हैं। मान लो मैंने Z को दे दिया तो मैं ऑटोमेटिकली X को नहीं दे सकता, Z को दे दिया तो मैं X को नहीं दे सकता, है ना। Z को दे दिया तो X को नहीं दे सकता। एंड मान लो मुझे W और X में से किसी एक को देना ही है, W और X में से किसी एक को देना ही है, मैं X को नहीं दे रहा तो W को तो दूंगा ही, बराबर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं V को दूं या Y को दूं। तो मान लो मैं V को देता हूं, तो अगर V को दिया तो W एंड Y दोनों को देना पड़ेगा, बट मेरे पास तो आइसक्रीम 3 ही है, मैं Z को ऑलरेडी दे चुका हूं। यानी अगर मैंने V को दिया तो मुझे Y को देना पड़ेगा और मैं Z को नहीं दे सकता, और अगर मैं Z को नहीं दे रहा और X को भी नहीं दे रहा देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 3 ही आइसक्रीम है, मैं एक V को दे देता हूँ, एक W को दे देता हूँ, एक Y को दे देता हूँ, कोई भी कंडीशन इसमें से वायलेट नहीं होता। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ, अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, पर अगर मैं X को दे देता हूँ तो मैं Z को नहीं दे सकता, है ना। तो मेरे पास क्या कंडीशन आ गया, देखो V W X Y Z। अब क्वेश्चन कहता है X को आइसक्रीम देना पड़ेगा, तो अगर मैं X को दे देता हूं तो Z को नहीं दे सकता। W और X में से किसी एक को ही दे सकते हैं, नहीं एटलीस्ट एक को दे सकते हैं, तो मैंने X को दे दिया। बट अगर मैं अब V को देता हूं तो मुझे Y और W दोनों को देना पड़ेगा, पर मेरे पास आइसक्रीम 3 ही है, एक को मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं V को नहीं दूंगा, तो किसको दूंगा, Y एंड W एंड Y को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Y एंड W। तो आप इन क्वेश्चंस को मैंडेटरी कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हो, मैंने समझाया, देयर फॉर आई टुक सो मच टाइम। अगर मुझे एग्जाम में करना है तो कैसे करना है, देखो एग्जाम में अगर कर रहा हूँ मेरे पास 5 ऑप्शन हैं, V W X Y Z। मैंने मैंडेटरी कंडीशन देखा, X को आइसक्रीम देना है और मुझे पता है कि अगर Z को देता हूँ तो X को नहीं मिलेगा, और अगर X को दिया तो Z को नहीं मिलेगा। मैंने X को दे दिया, Z को नहीं दे सकते। V को देंगे तो W एंड Y दोनों को देना पड़ेगा, तो V को भी नहीं देते, तो किसको देना पड़े, दे सकते हैं W X एंड Y। हो गया आंसर। सो इट विल टेक यू 30 सेकेंड्स टू सॉल्व अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो, बट यू नीड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल कंसिस्टेंसी, वरना इस सेकेंड कंडीशन को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर आपको पता था पहले से बहुत बढ़िया, बट अदरवाइज डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? इन केस यू डिड नॉट नो, आई होप इट इज क्लियर नाउ। जल्दी से एवरीवन। सो सानिया, इज इट क्लियर? नम्रा, इज इट क्लियर? कुछ लोगों ने गलत आंसर मार्क कर दिया था। कशिश, इज इट क्लियर? है ना, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस क्वेश्चन रिमेंबर लुक्स वेरी इजी, बट कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, सो आई एम नॉट टू श्योर, है ना। जल्दी जल्दी एवरीवन। भूमिका यस, अर्जुन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यू शुड हैव डन ऑलरेडी, है ना। मैं तो चाहता ही हूँ ये कि आप सबको प्रीवियस ईयर पेपर्स ढंग से किए होने चाहिए, बिकॉज you at least get to understand how to think, what kind of questions can be expected, or at least what kind of
अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम. ये एग्जाम क्लैट से काफ़ी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा अप्रोच इसके अंदर डिफरेंट होना चाहिए. पार्थ, यस. ओके एवरीवन, लेट्स सी. शुरू करें. The government of Kerala has reserved 75% seats in all public educational institutions for persons having domicile status in the state of Kerala. Public educational institution. The reason cited by the government is that other states in the country have taken similar measures with respect to their residents. The approach adopted by the state of Kerala is improper because every state authority is required to independently apply its own mind before arriving at a decision. Which of the following conclusions necessarily follows? Option 1, 75% seats in all public institutions are in fact occupied by persons holding domicile status in the state of Kerala. होगा क्या? Let me check your answers. B. Let me check. The information talks about educational institutions. Option 1 talks about public institutions. Not same. Out. The reason behind the introduction of domicile reservation by the state of Kerala is not an assessment of backwardness of certain parts of state. Exactly. That's exactly what the paragraph is saying. Paragraph कह रहा है state of Kerala ने अपना दिमाग नहीं लगाया, ऐसे ही दे दिया reservation. Which means it is definitely true that they have not done it on the basis of backwardness of certain classes, certain parts of Kerala. They have done it without application of mind. Suppose they had assessed the backwardness of people in the state, then this paragraph would have said they have done a good job, or maybe they should not have given 75, they should have given 50, whatever. But they have not done it. They have not done any assessment of backward classes, that is for sure. And therefore, the correct answer would be second follows, yani ki B only. I hope this is clear. Correct, everyone? All right. Chalo bhai. Reena, please make sure that your device is working properly. There must be some problem there, okay? All right, everyone, let's try this one. We are about to reach the end of the session. तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं कुछ questions. Parth, that's correct. If you're targeting CLAT 25, remember everyone, in case you are watching me and you're targeting CLAT 25, then make sure you prepare for all the other exams also. That means CLAT, AILET, MHCET, Jamia. Because just one exam cannot ensure you get the very best college. And for that, you know what to do, right? Join us. Chalo. Devishri B. Devishri says B. Okay. Parth B. Hitesh B. बी. चलो भाई, लेट मी चेक. भूमिका ए. भूमिका ने पहले कुछ और आंसर दिया था. नहीं, भूमिका सेड, भूमिका इज सेइंग ए. ओके. देवांश बी. एवरीबॉडी इज सेइंग बी. सम आर सेइंग ए. पता नहीं, लेट मी चेक. Only fruits are pasta. This I have explained in my previous 3 sessions also. If a statement says only A is B, just change it to all B's are A, है ना? Just reverse it. All B's are A. So this becomes only fruits are pasta. This becomes all pasta are fruits. And all noodles are pasta. Okay. All pasta are fruit. All pasta are fruit. All noodles are pasta. All noodles are pasta. Okay. So it says no fruits are noodles. No fruits are noodles. Not possible. Why? Because noodle is inside fruit, no?
So sum of these fruit and noodle will have a relationship of sum, है ना? क्योंकि I hope you know this kind of syllogism where the moment you put a smaller circle inside a bigger one, some of this will enter the smaller circle. ये आ जाता है automatically अंदर ना. So this smaller circle will have P, F and N, all three. So no fruits or noodles नहीं कह सकते, हो ही नहीं सकता. So first only statement 1 is certainly false, yes. Both statement 2 and 3 are certainly false. Let me check. All pasta are noodle. Yes, it is possible. All pasta are noodle. अरे noodle का size can be overlapping the pasta also ना. Common sense. When I say all noodles are pasta, it means noodle and pasta are either the noodle is inside pasta or noodle और pasta are overlapping each other. यही दो possibility है ना all में. तो सारे noodle pasta नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं. How can you say it is false? It is a possibility. All fruits are noodles. All fruits are noodles. Yes. Just imagine everyone. आप confuse कर रहे हो. First statement is all pasta are fruit. Second statement is all noodles are pasta. Now suppose I make all pasta fruits as overlapping statements. Overlapping circle बना दिया. Pasta fruit and noodle and pasta. Noodle भी को भी pasta के ऊपर overlap कर दिया. So now I have three overlapping circles. Pasta, fruit and noodle. Now can I say all fruits are noodle is wrong? All fruit and noodle सही हो जाएगा. So how can you say these are wrong? These are possibilities. The first one is the false statement. It says no fruits are noodles. No fruits are noodles. हो ही नहीं सकता. Some fruits are bound to be noodle. Some noodles are bound to be fruit. ये बिल्कुल false statement है. ये false हो जाए जरूरी नहीं है. Therefore the correct answer is option A. Is this clear everyone? फिर धोखा खा गए है ना आसान क्वेश्चन पे. So I got only one correct answer, that was from Bhumika, and then Bhavishya, and then Manvi. Correct, everyone? Third is true, therefore C is also not correct. This is also from AILET 2022 only. दिमाग नहीं लगाया तो आसान क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाता है ना. आगे चले एवरीवन, देवियों और सज्जनों, बहुत बढ़िया. आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में. ये रहा आपके सामने अगला सवाल 5 करोड़ रुपयों के लिए. जल्दी जल्दी. So again, get me the right answer. This one is quite easy. Just eliminate wisely. Absolutely doable question. इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं. काफ़ी आसान क्वेश्चन है. Let's see. Bhumika says C. All right, let me check. Manvi says C. Arjun C. All right, everyone, let me check the answer. April 1986 disaster at Chernobyl nuclear power plant in Ukraine was a direct consequence of Cold War isolation and the resulting lack of any safety culture. While no one in the West was under any illusion about the safety of early Soviet nuclear reactor designs, some lessons learned have also been applied to Western plants. Since then, the safety of all Soviet designed reactors have improved vastly. This is due largely to the development of a culture of safety encouraged by collaboration between East and West and substantial investment in improving the reactor. Inference means from any part of the paragraph you can derive it and say it is correct. Inference का मतलब है पैराग्राफ के किसी पार्ट से आ सकता है. Financial investment in nuclear reactor safety was not a priority for governments prior to Chernobyl disaster. Paragraph talks about it was not a priority for Soviet government. This says governments.
How many governments? 1 to 100? No idea. Therefore, wrong. In the period preceding the Chernobyl disaster, Western nuclear scientists believed that then their nuclear reactors are superior than Soviet nuclear reactor designs. Any information about that? They believed Soviet nuclear safety regulations are bad, but their designs were superior. No information. The level of collaboration between Western and Eastern nations in the pre-Chernobyl era and post-Chernobyl era. There is a difference. Yes, earlier it was low, now it is more. Exactly. Therefore, the correct answer is C. बिल्कुल सही बात है. Elimination, everyone. Just eliminate. क्या करना है इसमें? Eliminate करते जाओ. बहुत बढ़िया. करेक्ट आंसर आ गया. शानदार. ये रहा आपके सामने अगला सवाल from 2022. I'll start reading it in 30 seconds, but पहले आप ट्राई करो करेक्ट आंसर बताने का. 5 करोड़ रुपए आपको जल्दी मिल जाएंगे केडी कॉइन्स में. इट्स अ न्यू काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी. केडी कॉइन्स. ऑल राइट. भूमिका ने बोला ओके सर. क्या बात भूमिका, यू आर सच एन ओबीडियंट स्टूडेंट. चले, लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. कितना ही मुश्किल होगा. Black people are about twice as likely to develop Alzheimer's disease as white people, but for years the pharmaceutical industry has mostly left them out of trials intended to prove new drugs are safe and effective. Now this is just explanation है ना, ये explanation part है. पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता. Black people are twice as likely to develop a disease, but they are not part of the experiments of the medicine. उनके चांसेस दुगने हैं उस बीमारी के होने के, और मेडिसिन के ट्रायल में उनको आप हिस्सा ही नहीं देते. क्या कह सकते हैं? The disease is still poorly understood and the brain pathology and disease genetics may be different in groups with different ancestry. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? What is it that we can say? What is likely to be true? Which of the following is likely to be true? ये ढूंढना है. बताओ आंसर. जिनको ये बीमारी होने के चांसेस डबल हैं उन्हीं को आप शामिल नहीं कर रहे ड्रग ट्रायल में. मतलब कितने ही वाहियात और नालायक इंसान हैं आप. चलो भाई. डी 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 डी. ऑल राइट, लेट्स रीड. पढ़ते हैं. ड्रग कंपनीज फाइंड इट इकोनॉमिकल टू एनरोल नॉन ब्लैक पार्टिसिपेंट्स. मतलब वाइट लोगों को एनरोल करना आसान होता है. इज द कॉस्ट अ फैक्टर हियर? नो. ब्लैक पीपल आर रिलक्टेंट. नो इन्फॉर्मेशन. अप्रूवल ऑफ ड्रग एक्स विल इनेबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू बेटर अंडरस्टैंड. जिनको डबल होने के चांसेस है उनको आप शामिल नहीं कर रहे. तो अप्रूवल से क्या हो? अप्रूवल तो बाद में आएगा ना, पहले तो टेस्ट की बात हो रही थी. सो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड. द अप्रूव्ड ड्रग एक्स मे नॉट बी सेफ एंड एफिशिएंट फॉर ब्लैक पीपल बिकॉज उनको शामिल ही नहीं किया, तो उनके लिए सेफ्टी होगी नहीं होगी. तो करेक्ट आंसर क्या है? डी आंसर है. हो गया आंसर. ऑल दिस फ्रॉम द सेम सेट एवरीवन. एक मुश्किल सवाल, अगला सवाल देखो कितना आसान है ना. अब बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है. ऐसे सवाल को देख के लगता है भाई एनएलयू दिल्ली के कैंटीन में बैठे हैं, खा रहे बढ़िया चाय पकौड़े और पैटी भी है ना, आलू पैटी. आई लाइक इट. सो ऐसे सवाल को देख के दिल खुश हो जाता है, हिम्मत आ जाती है. अरे, कुछ भी नहीं है, पेपर फोड़ डालेंगे इसको. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर एवरीवन विदाउट फेल. Okay, I started getting answers.
चलो भाई, let's see. People are always blaming circumstances for their difficulties. Most who succeed in this world are people who get up and look for the circumstances they want, and if they cannot find them, they make them. हिम्मत आगे पढ़ के है ना. Which of the following is an assumption? Assumption का मतलब होता है, अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो I have already talked about the shortcut. What is the shortcut? Must be true करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो. अगर ये सत्य है तो इनमें से कौन सा मस्ट बी ट्रू है? ऑप्शन 1 कहता है फेलियर इज ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ. ऑलवेज सत्य है? नहीं कह सकते. दोज हु डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस आर सक्सेसफुल. नहीं कह सकते. देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डिजायर्ड सर्कमस्टांसेस एंड सक्सेस. बिल्कुल. मोस्ट टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड आर पीपल हु गेट अप एंड लुक फॉर सर्कमस्टांसेस. दिल से चाहोगे तभी सफलता मिलेगी. सफलता वरना भाग जाएगी. सफलता बोलेगी ऐसे इंसान के पास जाके फायदा क्या है, कुछ करता तो है नहीं, सोता रहता दिन भर. सो यू हैव टू हैव दैट डिजायर, तभी सफलता मिलेगी. कोरिलेशन है, 100% नहीं, बट है ना. तो करेक्ट आंसर हो गया सी. बिल्कुल सही बात, सही जवाब एवरीवन. बहुत बढ़िया. 10 करोड़ का सवाल आप लोगों ने बिल्कुल सही कर दिया. हम सेशन ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं, सो प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स एवरीवन. जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है. assumption है एवरीबॉडी. assumption का मतलब मस्ट बी ट्रू. बस ये ढूंढना है. इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों ने गड़बड़ आंसर किया था, है ना, बिकॉज द ऑप्शंस आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग. बट आई हैव कंप्लीट फेथ ऑन यू गाइज. यू विल गेट इट राइट, नो डाउट्स अबाउट इट. लेट्स सी. सेशन थोड़ा लंबा चल गया है, बट आई होप यू वुड बी एबल टू कोप. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. घर पे बैठे हो, खाते खाते कर लेना. डोनट खा लो और पिज्ज़ा भी. चलो गोस्वामी भविष्य गोस्वामी ने बोला सी. मानवी ने बोला सी. अमित सी. जुनैरा, जुनैरा हैज आंसर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. है जुनैरा, तुमने अभी तक आंसर नहीं किया था. सी. सानिया सी. सानिया सी. सानिया 2 बार आंसर कर लिया. क्रिप्टन सी. बहुत बढ़िया एवरीवन. सी 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 सी. बहुत शानदार आंसर. चलो देखते हैं. Rather than adopt conventional ways of water consumption, we should all start storing our water in copper containers so that we can get the benefits of copper intake. It's now well proven that storing water in a container for 24-48 hours is very effective in transmitting some copper content into the water. Which of the following is the author's belief? Author इनमें से किसको सत्य मानता है? ऑप्शन बी कहता है we should drink adequate amount of water every day. The paragraph is about copper, keeping water in copper container. पानी कहाँ से आ गया? Storing water in copper container is one of the best ways. Best कहाँ से आ गया? Where are the other methods? Where is the paragraph talking about other methods? Out. Option 1, it is safe to drink water out of a copper container. बिल्कुल. ऑथर इस बात को सत्य मानता है, तभी तो कह रहा है कि कॉपर के कंटेनर से पियो. अगर वो इसको गलत मानता तो नहीं बोलता. एंड नन नहीं होगा. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. डोंट अंडर एस्टिमेट दीज क्वेश्चंस, है ना. मार्क एवरी वर्ड, चेक एवरी वर्ड काउंट्स. बेस्ट वेज कहाँ से आ गया? रिक्विजिट कॉपर कंटेंट कहाँ से आ गया? पैराग्राफ कहता है बेनिफिट ऑफ कॉपर इनटेक आएगा. कितनी मात्रा चाहिए, वो मात्रा आपके शरीर में पहुंचेगी कि नहीं, ये कहाँ लिखा है? सम कॉपर कंटेंट लिखा है. रिक्विजिट मात्रा पहुंचेगी लिखा है. कैसे बता दिया आंसर सी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो थोड़ा बहुत झटका जरूर लगा होगा, है ना. एब्सोल्युटली. तो काफ़ी लोगों ने अभी अभी रियलाइज़ किया, अरे यार हाँ यार, तो देखा ही नहीं था. काफ़ी दुखी हो गए. आज लंच में एक रोटी कम खाएंगे, 5 पराठे कम खाएंगे. चलो भाई अगला सवाल. ये हो सकता है आखिरी सवाल हो, मुझे याद नहीं है, बट दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग. ये बहुत ही लड्डू सवाल है. सो remember everyone, if you found the session useful so far, consider pressing the like button. देखो यहाँ पे देख बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं, अब like button कम लोगों ने प्रेस किया हुआ मुझे दिख रहा है. And spread the word, tell your friends. We will come up with the best analysis of AILET after the paper is over. पेपर खत्म होने के बाद कहीं नहीं जाना है, सीधा हमारे चैनल को ज्वाइन करना है यूट्यूब पे, है ना. एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग ज्वाइनिंग अ बैच फॉर 25, हमारे पास बैच चल रहा है धांसू वाला. सो डोंट
go anywhere, you know where to come. 3 दिन के लिए आप हमारा सेशन भी, हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. सो 3 days ट्रायल पीरियड भी ऑन है, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट ऑल्सो, राइट. ओके. और अगर ओलेट वगैरह के लिए मॉक्स देना है तो हमारा मॉक सीरीज भी चल रहा है. अब बताओ, सब कुछ कर दिया हमने, क्या ही बचा है अब. चलो. D 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 D. All right, everyone. Let me check. Everybody, all boxes are plugs. All boxes are plugs. All plugs are bottles. अच्छा, ये सब एक दूसरे के अंदर ही हैं. Examine the following statements. All plugs are boxes. All plugs are boxes. ये बॉक्स है. हो सकता है. हो सकता है. All bottles are boxes. All bottles are boxes. हो सकता है. अगर बॉक्स को बड़ा कर दूं तो हो सकता है. तो ये सत्य तो नहीं है, मे बी है. मे बी, मे बी. नो बॉटल्स आर बॉक्सेस. नो बॉटल्स आर बॉक्सेस, ऐसा नहीं हो सकता. एटलीस्ट एक तो पक्का इसमें यूनियन है, तो ये पक्का फॉल्स है. ओनली स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. नो. स्टेटमेंट 2 and 3 आर फॉल्स. नो. 1 and 3 आर फॉल्स. नो. थर्ड इज फॉल्स. यस. तो करेक्ट आंसर हो गया डी. एलेट के क्वेश्चंस की भी कोई ज़्यादा औकात रही नहीं हमारे सामने, है ना. तुम लोगों ने पिछले 3 दिन में कितने ही क्वेश्चंस कर डाले हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच द लास्ट 3 सेशंस, प्लीज़ वॉच देम. दे आर कॉल्ड एलेट क्रैश कोर्स लॉजिकल रीजनिंग 1 2 3. प्लीज़ वॉच. एंड तुम्हें पता ही है क्या करना है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ OLET test series, we have got the best one. If you're thinking of a CLAT 25 course, we have the best one. I'll see you again, everyone. Don't miss our comprehensive analysis of AILET on 10th 2 p.m. onwards. All the very best for AILET, everyone. Make sure you don't panic. Make sure you don't get stuck. Make sure you find all the easy ones, kill them first, moderate ones after that, and फिर difficult पे जाना. दिल से किसी क्वेश्चन को मत लगाना, ईगो पे मत लेना, और ये मत बोलना पेपर को कि तू बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो सकता. उसको बोलना मैं हूँ, आई कैन डू इट. एंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. आई विल सी यू अगेन एवरीवन. गुड लक. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.